So, hello and welcome to another session, okay, on drawing. And so we're going to continue from where we left off last time. और आज का टॉपिक आपने देखा ही होगा कि आज का टॉपिक है व्यू पॉइंट. सो बेसिकली व्यू पॉइंट क्या होता है और आज उसमें डिस्कशन करेंगे. आज मैं कुछ ड्राइंग डेमो भी करूंगा. तो अब तक जो हमने पढ़ा अभी तक जितने मेरे 4-5 सेशंस हुए हैं, हमने एक बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ा. जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब आने वाले सेशंस में जो हमने बेसिक फंडामेंटल्स जो पढ़े हैं या मैंने सिखाया है अभी तक, वो कैसे अप्लाई किया जाता है टू एक्चुअल ड्राइंग. एंड उसी चीज को आज मैं कुछ ड्राइंग्स डेमो करके दिखाऊंगा. आई ट्राई टू स्क्वीज इन एटलीस्ट 2 ड्राइंग्स बिकॉज एक कॉम्पोजिशन की ड्राइंग है तो उसमें टाइम लगेगा बनाने में. सो इट इज very very important because I want to make sure that what I'm drawing is almost accurate. The point of drawing or today's session is not to draw something very hyper realistic or something very ultra realistic या बहुत आर्ट वर्क ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ड्रॉ करने से क्या चीज देखा जाएगा ड्राइंग में, किस जिसके बेसिस आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हाँ, आज हम उसकी बात करेंगे. जैसे मैंने पहले सेशन में कहा था कि द ड्राइंग, आपको जो अप्रोच जो देखना है, इट इज अबाउट द प्रोसेस. सो व्हाट इज द प्रोसेस रादर देन व्हाट इज बीइंग ड्रॉन. क्योंकि जो चीज ड्रॉ करना है वो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब में. इट्स नॉट ओनली कि मैं पहली बार सिखा रहा हूँ या दिस द फर्स्ट टाइम या नया टॉपिक है, ऐसा नहीं है. मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने ये चीज ड्रॉ किया होगा. द प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी को ड्रॉ करते देखते हैं ना, तो वी डोंट सी द प्रोसेस बट वी सी रादर सी व्हाट इज ही ड्राइंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे से हाउ टू ड्रॉ प्रोडक्ट, जैसे हाउ टू ड्रॉ टेबल या how to draw a chair या how to draw something like that. Okay. Now, when one is seeing that video on how to draw something, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन फोकस ये है कि वो प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ करना है, रादर देन कि वो प्रोडक्ट ड्रॉ करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए ना. उससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप चेयर ड्रॉ करना सीख जाओगे, टेबल ड्रॉ करना सीख जाओगे, या माउस ड्रॉ करना सीख जाओगे आप. लेकिन वहीं पर मान लीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए माउस पे नहीं आया या टेबल पे नहीं आया या किसी चेयर पे नहीं आया. मान लो आपको ऐसा प्रोडक्ट आया जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है ड्रॉ करते हुए. देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दैट ओके, अब मैं क्या ड्रॉ करूं, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ दिस. ओके, सो दैट इज व्हाई आई सेड द ड्राइंग प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड रिजल्ट. अगर आप ड्राइंग प्रोसेस आपको पता है, आप फिर एंड रिजल्ट आप में कुछ भी बना सकते हैं. ओके, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट. नाउ व्हाट इज मेंट बाय व्यू पॉइंट. तो आज का जो टॉपिक मैंने है, जो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट बेसिकली क्या होता है. तो व्यू पॉइंट बेसिकली ये होता है, इट इज बेसिकली पर्सपेक्टिव. ओके, आप एक ऐसा पर्सपेक्टिव चूज करते हो कोई कॉम्पोजिशन या कोई सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक ड्रॉ करने के लिए. आप ऐसा एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ चूज करते हो जिसमें वो सबसे बेस्ट तरीके एंड एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग वे में उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो इट कुड बी एन आउटडोर कॉम्पोजिशन, इंडोर स्केचिंग हो सकता है, प्रोडक्ट स्केचिंग हो सकता है, कुछ एक्टिविटी करते हुए स्केचिंग हो सकता है, कुछ एक्शन करते हुए हो सकता है, या समथिंग इज हैपनिंग या कुछ एनीथिंग. ओके, कोई पोस्चर, जेस्चर, कोई भी इवेंट जो भी है, वो सब हम ड्रॉ करते हैं, किसी न किसी पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हैं. नाउ इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू शो मी, लाइक, और फॉर एनी वन फॉर दैट मैटर, टू ड्रॉ एवरीथिंग कि अच्छा इस चीज के लिए पर्सपेक्टिव कौन सा सही रहेगा, उसके लिए पर्सपेक्टिव कौन सा सही रहेगा. So that is virtually impossible for anyone to draw because there are infinite things to draw. So that is why it is very important to understand what is the approach. Okay. So आज जो मैं ड्राइंग जो डेमो दिखाने वाला हूँ, हम एक कुछ कॉम्पोजिशन करने वाले हैं, इंटीरियर कॉम्पोजिशन. और उसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. Okay. So without further wasting further time, and let's get to the drawing part. Okay. And
उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, तो मैं एग्जांपल्स आपको कुछ शेयर करता हूँ. वेरी सिंपल एग्जांपल, नॉट दैट वेरी फैंसी. ओके, सो हियर इन फ्रंट ऑफ यू यू सी दैट देयर इज अ व्हीकल. आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ टॉय कार. बहुत बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स है. मेरे को डिजाइन यहाँ पे, द पॉइंट वाज नॉट डिजाइन, द पॉइंट वाज टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट. अब यहाँ पर कुछ चीजों में आपको हाईलाइट करना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्राइंग, जो मैंने पिछले वाले सेशंस में भी मैंने ये बात की थी. अब यहाँ पर आपका एक साइड व्यू है लाइक अ ट्रक. ओके, और उसको मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया. दिस इज मोर लाइक अ फ्रंट व्यू, लाइक अ ड्राफ्ट व्यू, बट मेन थिंग इज हियर. Now, the reason why I chose this to draw is that to show that जब हम व्यू पॉइंट कब यूज करते हैं, तो व्यू पॉइंट एक प्रोडक्ट के लिए और किसी और सब्जेक्ट टॉपिक के लिए अलग होगा. ओके, नाउ हियर both this they're the same truck, they're drawn in this 2 point perspective but in different viewpoint, मीनिंग दैट डिफरेंट एंगल है. मेरा व्यू पॉइंट जो था ड्रॉ करते हुए, इसका एक अलग व्यू पॉइंट था, अलग एंगल था, इसका एक अलग एंगल था. ओके, आप वो कैसे बता सकते हो? आप देखो, तो व्यू पॉइंट का मेन पर्पस क्या होता है? एक विजुअल इंफॉर्मेशन देना जो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ सके. ओके, ना वो मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूँ. सो हियर दिस इज माय व्हीकल, और आप देख रहे हो कि उन्होंने मार्कर से कुछ सर्कल्स बनाए हैं. और को याद होगा कि मैंने पिछले प्रोपोर्शंस वाले सेशन में बताया था कि सर्कल्स को हम कैसे ऐसे प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं टू डिवाइड अ प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग. तो वही चीज मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शंस बता देता था ताकि वो समझ में आए आपको. तो यहाँ जो व्हील जो है, जो सॉरी जो लेंथ ऑफ द जो कार है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स इज अबाउट 2 सर्कल्स. तो ये जो सर्कल जो है, इट इज आई हैव टेकन द साइज ऑफ द व्हील एज अ सर्कल, एज अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, so let me just use my index finger and thumb to show the proportion. अब proportion कैसे लिया मैंने इसके लिए? So this is the width of my circle. Okay. So this is the width of my circle. So 1, 2, 3, and 4. So the proportion is that. So there are 2 wheels between the front tire and the rear tire. This is how you take proportions in cars. जो car sketching करते हैं ऐसे करते हैं. Okay. So this is the length and, और यहाँ जो फ्रंट विथ है जिसको ओवरहैंग बोलते हैं, जो टायर का आगे वाला हिस्सा और टायर का पीछे वाला हिस्से को ओवरहैंग, रियर ओवरहैंग बोलते हैं, फ्रंट ओवरहैंग बोलते हैं उसको. तो दिस इज अबाउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कल. ओके, अबाउट लाइक 3/4 और समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज मेन के मोर लाइक अ 1/3. दिस इज जस्ट लाइक इंट्यूटिव. जैसे मैंने बोला था कि बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन आपको नहीं मिलेगा, तो एक जैसे इंट्यूटिव. नाउ जैसे मैंने कहा था पिछली बार, इज अ विजुअल बैलेंस बिटवीन हाइट एंड विड्थ, राइट? सो हियर विड्थ इज लेंथ, सो हाइट जो है अनदर यूजिंग द सेम सर्कल 1, 2, 3, सो इट इज 2 and just more than half of the circle. Okay, so ये the height, ये maximum height है, ये जो लाइन देख रहे हो. Okay, and here the cabin area, तो cabin area जहाँ ड्राइवर बैठेगा, it is I have taken almost exactly the height of 2 circles, 1, 2. Okay, so these are my proportions. तो मैंने एक ऐसे रेफरेंस डाल दिया. अब ये रेफरेंस को लेके मैंने, क्योंकि ये 2D में है, मुझे इसको 3D में प्रेजेंट करना है. बिकॉज हियर आई कैन ओनली सी द साइड व्यू ऑफ द कार, ऑफ दिस व्हीकल. आई नीड टू शो दिस, नीड टू नो दिस इन 3D व्यू. ओके, सो नाउ हियर दिस इज व्हाट इज इन 2 point perspective using this proportion. तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक 2D proportions को 3D में proportions में लाया है. So this is called transferring of proportions. So as I said, that now applying all the things which I taught so far till date, all the things have been applied here. Line quality, perspective, proportions. ये जो मैंने आपको याद होगा, मैंने पहले सेशंस में कहा था, ये सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ डिटेल मैंने क्या था, डिटेल मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था, डिटेल इज लास्ट, लेकिन हम डिटेल्स की बात नहीं करेंगे. प्रोपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, लाइन क्वालिटी. ओके, सो हियर आई हैव चूजन अ व्यू पॉइंट हियर वेयर इन दिस व्यू, अगर मैं व्यू नंबर 1 बोलूं उसको, सो व्यू नंबर 1,
and let's call this view number 2. View number 2. Okay. They are the views of the same car, same vehicle, but what is the key difference? And when I say viewpoint, what do I mean by that? Okay. Now in the view number 1, if you look at this vehicle in this perspective, this looks much more pleasing than this one. For now, ignore the scale of the sketch. Scale of means this the size of the sketch है. यहाँ बड़ा यहाँ छोटा है because there is some space left. Ignore that. The proportions and everything are same. Okay, proportion change नहीं हुआ, proportions वही है. Okay. Now here this looks much more informative than this sketch. Why? Why it is? Here I can see the whole side view. तो ये साइड व्यू आई कैन रिलेट टू द साइड व्यू हियर. ओके, मोर और लुक सेम, दोनों सेम लेंथ दिख रहा है. मेरा जो फ्रंट विड्थ है वो भी एक साइड व्यू के साथ एक मैच कर रहा है. आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन में कहा था विजुअल बैलेंस बिटवीन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. हम 3D की बात करेंगे तो ब्रेथ भी आ जाएगा, विड्थ भी आ जाएगा. ओके, सो विड्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ विड्थ टू द लेंथ लुक्स वेरी प्रोपोर्शनल, लुक्स वेरी प्लीजिंग. ओके, हाइट सब कुछ मैच कर रहा है, प्रोपोर्शन सब कुछ दिख रहा है. मुझे एक पूरा एक 3D वॉल्यूम एक गाड़ी का मुझे पता चल रहा है. नाउ इफ आई व्हेन आई मूव टू द सेकंड व्यू पॉइंट, हियर यू सी दैट अब मैंने क्या किया, एक मैंने एंगल चेंज कर लिया जिसमें आई सी मोर ऑफ द फ्रंट एंड लेस ऑफ द साइड. ओके, नाउ हियर मुझे गाड़ी का फ्रंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, साइड कम दिख रहा है. अब इससे क्या हुआ कि जो साइड प्रोपोर्शंस है, इफ आई लुक एट द रेफरेंस ऑफ माय साइड व्यू हियर, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा दिख रहा है. क्योंकि बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट मैंने एक ऐसे बहुत थोड़ा सा एक्सट्रीम एंगल मैंने चूज किया. तो अगर मुझे किसी को प्रेजेंट करना है, मुझे ये मान लीजिए एक आइडिया है एक गाड़ी का, अगर मुझे किसी को मुझे प्रेजेंट करना है अपने आइडिया को, तो मोस्ट प्रोबेबली द पर्सन हु इज गोइंग टू लुक एट दिस ड्राइंग ऑफ दोस टू स्केचेस, ही विल मोस्ट प्रोबेबली रिलेट टू दिस वन रादर देन दिस वन. बिकॉज यहाँ पर मुझे वॉल्यूम जो है, अगर आप देखोगे स्केच को, दोनों को कंपेयर करोगे, ये वॉल्यूम थोड़ा कंप्रेस दिख रहा है. Here this cabin, so the storage area, you can say that here it looks much more proportional. ये तो यहाँ बिल्कुल स्क्वायर हो गया. याद है मैंने कहा था पिछली बार फोर शॉर्टनिंग हो गया, प्रोपोर्शन फोर शॉर्टन हो गया. इससे क्या हो गया कि मेरा फ्रंट तो सही दिख रहा है, लेकिन मेरा साइड जो है ऐसे कंप्रेस हो गया बिकॉज ऑफ द व्यू पॉइंट, द पर्सपेक्टिव एंगल चूजन. द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द कार लुक्स डिफरेंट, इट डजंट लुक अपीलिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. तो ये एक व्यू पॉइंट ऐसे अफेक्ट करता है आपके ड्राइंग को. ओके, नाउ दिस सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू द प्रोडक्ट स्केचिंग, कैन बी अप्लाइड टू द इंटीरियर स्केचिंग, कैन बी अप्लाइड टू आउटडोर स्केचिंग, कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग. ओके, तो ये चीज समझना जरूरी है. अब जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, अगर आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ दिस मार्कर लाइंस. सो इट इज नॉट समथिंग दैट, तो अगर मैं आपको पेज टर्न करूंगा ना, अब यहां पर आप देखोगे बहुत सारी लाइंस, बिल्कुल जम्बल्ड अप लाइंस हैं. बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट व्यू टू ड्रॉ इन. सो देयर आर लॉट ऑफ दिस, आप शायद अब कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट देयर आर लॉट ऑफ दिस रेडिएटिंग लाइंस. थॉट ऑफ maybe first I thought of drawing in one point perspective, then I thought नहीं, one point perspective बहुत एरियल व्यू हो जाएगा, तो उसमें वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, साइड व्यू बहुत कंप्रेस हो जाएगा. सो दैट्स हाउ बिफोर आई स्टार्टेड स्केचिंग. तो दिस इज द काइंड ऑफ लाइक अ रिसर्च, विजुअल रिसर्च मैंने किया. वंस आई वाज satisfied और अंडरस्टूड ओके व्हाट इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ, यू कैन सी दैट मैंने बहुत लाइट ड्राइंग किया है, बहुत रफ स्केच बनाया है. जस्ट मैंने उसको ऐसे फ्लिप किया, इमेज को ऐसे फ्लिप किया, देन आई मेड द फाइनल ड्राइंग. और यहाँ पर भी मैंने लिटरली किसी को कॉपी नहीं किया. आई मेड फ्यू एडजस्टमेंट. नीदर डिड आई लिटरली फॉलो द अंडरलाइंग ड्राइंग कंस्ट्रक्शन, बट व्हेन आई वाज ड्राइंग देन आई वाज लुकिंग, ओके ठीक है, मेरा पॉइंट क्या है, मुझे एक अच्छा वॉल्यूम दिखाना है. सो हियर लिटरली दिस लाइन, द फाइनल लाइंस व्हिच आर ड्रॉन,
दे आर नॉट फॉलोइंग द अंडरलाइन कंस्ट्रक्शन। जो कहीं मुझे लगा कि ठीक है, नहीं थोड़ा सा प्रोपोर्शनल, कहीं प्रोपोर्शन ठीक नहीं जा रहा है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो यही चीज आपको भी करना है। ओके, यही चीज आपको करना है। ओके, सो we'll get to the demo part. I hope you understood. अगर आपको कोई भी questions है, please do write in the chat box, and we'll do that. Okay. Okay. So as I said, I'll try to squeeze in two drawings here. तो one is इंटरनेट कॉम्पिटिशन, मैंने सोचा चलो एक प्रोडक्ट ड्राइंग भी करते हैं। तो इसमें ज्यादा क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले करना ना पड़े, तो मैंने कंस्ट्रक्शन पहले ही मैंने कर रखा है। एंड आपको मैं दिखा दूंगा कंस्ट्रक्शन कैसा है। So this is the construction. So this is actually a product. This is actually a juicer mixer. बहुत सिंपल सा बनाएंगे, बहुत इसको हाइपर रियलिस्टिक अल्ट्रा रियलिस्टिक प्रोडक्ट ड्राइंग करेंगे, बहुत सारी डिटेल्स नहीं डालेंगे। बेसिकली एक व्यू पॉइंट की मैं बात करता हूँ, प्रोडक्ट के व्यू पॉइंट और एक हम इंटीरियर स्केचिंग का व्यू पॉइंट देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक रफली अगेन फिर से मैंने कंस्ट्रक्शन बनाया। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन में वो प्रोपोर्शन ढंग से नहीं बैठ रहा था। देन आई नीडेड टू एडजस्ट इट। ओके, नाउ आई फॉरगॉट टू मेंशन द टाइम, कितना टाइम मुझे ये चीज करने में लगा। सो दिस टुक मी अराउंड 10 to 15 minutes टू कम अप विद दिस। ओके, दिस प्रिपरेशन। वंस आई वाज सेटिस्फाइड, एक मैंने रफ ड्राइंग बना दिया है, और जब मैं इसको जो फाइनल ड्राइंग करूंगा, तो ये जरूरी नहीं कि मैं इसको लिटरली इसको फॉलो करूंगा। वाइल ड्राइंग अगेन आई विल सी दैट, जैसे अभी जब मैं इस सेशन से पहले मैं ड्राइंग को देख रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि ये वाले जो प्रोपोर्शंस है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वो स्लाइटली ऑफ दिख रहा है मुझे। तो जब मैं इसको फाइनल ड्राइंग करूंगा, आई ट्राई टू एडजस्ट दैट। ओके, तो अब इसको हम करते हैं ड्राइंग, एक साइड कर लेते हैं। ओके, सो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो आप एक कोई तो ये जो पेपर जो है मैं बता देता हूँ, आपको शायद क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज दैट पेपर आई एम यूजिंग। सो दिस इज अ मार्कर पेपर, लेकिन आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कम्स इन लाइक दिस। आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये ऐसा मार्कर पैड होता है, ऐसे मार्कर पैड होता है। दिस इज मेड ऑफ 100 sheets। So these 100 sheets of this marker paper. Okay. Now this is very very expensive. Please do not buy this. I will not advise you to buy this. But आपको मैं एक alternate एक सस्ता ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा। So what you need to do is that आप क्या करना, आप एक 70 GSM, तो आपको मैं लिख देता हूँ एक जगह पे पेपर। So what you need to buy is that, so you need to buy a paper thickness, और पेपर वेट बोलते हैं, which is like 70 GSM. So GSM is the paper weight, 70 GSM or say 65 GSM। इस तरह का पेपर आप, अगर आपको कहीं मिल सकता है, मोस्ट लाइकली आपको किसी स्टेशनरी शॉप में शायद नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू गो टू एन होलसेल मार्केट। ओके, जहाँ बल्क में मिलता है। okay? अगर आपको ये नहीं मिलता है, इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, यू कैन यूज बटर पेपर। So meaning a paper which is bit like translucent है। ओके, लाइक अ ट्रांसलूसेंट पेपर। तो ये जो पेपर है थोड़ा ट्रांसलूसेंट है, तो आई कैन सी दैट अंडरनीथ, कि मुझे ड्राइंग दिख रही है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह का पेपर आप खरीद सकते हो। अदरवाइज एक और पेपर जो आता है, जो शायद आपको मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं न्यूज प्रिंट। सो न्यूज प्रिंट पेपर, दिस इज वेरी चीप, चीपेस्ट ऑफ ऑल दिस पेपर। न्यूज प्रिंट पेपर बेसिकली जो आप न्यूज पेपर जो हम पढ़ते हैं, वो वाला पेपर होता है, वो बहुत थिन होता है वो। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ऑफ दिस न्यूज प्रिंट पेपर ये है, आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, जैसे अगर का पेंसिल आपकी बहुत नुकीली पेंसिल है, बहुत पॉइंटेड पेंसिल, आप थोड़ा सा आपने प्रेशर लगाया, वो उसके आर पार हो जाएगा, वो छेद कर देगा उसमें। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्केचिंग हाउ मच प्रेशर यू हैव टू अप्लाई। बट एज अ चीपर ऑप्शन आई वुड से दैट दिस काइंड ऑफ पेपर इज गुड इनफ। ओके, ओके, सो लेट्स गेट टू द स्केचिंग। ओके, सो जैसे मैंने कहा, अब मैं ड्राइंग करूंगा, तो हम प्रोडक्ट ड्राइंग करेंगे। अब मैंने जो ये व्यू पॉइंट जो चूज किया है, नाउ
आज के व्यू पॉइंट में मैं मेंशन करना भूल गया, हम ड्रॉ कर रहे हैं एट आई लेवल। ओके, सो वॉट एवर यूर ड्रॉइंग विच आर मेकिंग, इट इज मेकिंग एट आई लेवल, सो दैट मीन्स हॉराइजन इज एट आई लेवल। आने वाले सेशंस में एंड्स आई व्यू, फ्रॉग आई व्यू, एरियल व्यू, इस टाइप के हम में करेंगे, उसके उसके पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहले मैं नीचे वाला बॉडी बनाऊंगा, देन स्लोली विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आई एम लुकिंग एट द स्केच, तो ओवरले कर रखा है मैंने। एंड जैसे मैंने कहा था कि मुझे एक राइट वाला साइड का जो बॉडी पार्ट जो है वो मुझे स्लाइटली ऑफ दिख रहा था इन कंपैरिजन विद दिस वन, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई ड्रॉ इज द फर्स्ट कॉर्नर विच इज नियर टू मी, हम इस साइड से देख रहे हैं। तो अभी मैं फिर से लाइटली स्केच करूंगा। सो आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड मेक अ फाइनल ड्राइंग। ओके, तो डोंट वरी, मैं इसको फाइनल में डार्क और करूंगा, आपको दिख जाएगा। तो पहले हम एक बेसिक वॉल्यूम से शुरू करेंगे। तो यहाँ बेसिक वॉल्यूम बेसिकली एक यहाँ पर क्या, एक स्क्वायर पिरामिड है। तो द बॉडी जो है इसकी मिक्सर ग्राइंडर की नीचे वाले बॉडी जो है एक स्क्वायर पिरामिड है। ओके, सो so I want to keep these proportions on this side. Okay, and पहले काम करते हैं, पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यस, एंड एंड रिमेंबर गाइस, मैं वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, ड्राइंग फ्रॉम योर आर्म, सो आई एम नॉट यूजिंग माय रिस्ट। ओके, so again same principles, I'm applying all the basic principles here. Okay, so now I need to draw this proportion this side. Okay, so again drawing very lightly, so don't worry about like multiple lines kind of thing। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा प्रोपोर्शन मुझे इसका कंपैरिजन थोड़ा छोटा लग रहा था, तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा कर लूंगा, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। सो आई नीड टू सी ओके वेयर इज दिस हाइट एंडिंग, एंड तो मैंने ये वाली लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर ली है। I'm looking at this proportion. I want to make sure that this side proportion looks also equal in this perspective. So मैं स्लाइटली थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूंगा। पहले मैं थोड़ा हल्का सा ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा और एंगल थोड़ा सा कम कर लेते हैं। या, तो दिस लुक्स ऑल राइट। सो मुझे नीचे वाला सरफेस मिल गया, यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जब प्रोडक्ट स्केचिंग करते हो तो आप इसी तरह से करना, यू स्टार्ट विथ वेरी बेसिक फॉर्म्स। ओके, and so let's make the back circle, complete the top surface. And be mindful about the perspective, that is very important। okay, एक मुझे basic shape मिल गया। okay, so okay, what else do I need to add? okay, नीचे complete इसका stand complete कर लेते हैं। so, okay, again light drawing, I'm not worried about like detailing that much, I can always go back and complete the details। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम बहुत हाइपर रियलिस्टिक काइंड ऑफ ड्राइंग नहीं बनाएंगे, बट जस्ट टू शो, एक विजुअली कम्युनिकेट करना है हमको आइडिया। ओके, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। मेक श्योर दैट माय underline sketch is aligned with the top sketch। okay, okay, so we are more or less, so I'm just, I'll lift the page to see कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। इसकी less thickness, make sure everything is correct। ठीक है,
सो नाउ अब ऊपर वाला जो हमारा जो जिसमें हम ग्राइंड करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ, सो दैट्स कोनिक शेप में, इन्वर्टेड कोनिक शेप में। ठीक है। तो यहाँ पर हम, मैंने क्या किया है, एक चीज आपको बता देता हूँ। तो मेरा जो ड्राइंग अप्रोच जो है, इस पूरे प्रोडक्ट को मैंने 3 वॉल्यूम में ब्रेक कर लिया। सो फर्स्ट इज योर स्क्वायर पिरामिड, इन्वर्टेड कोन एंड अ हेमिस्फीयर, एंड ऑन टॉप फिर एक जो उसका ढक्कन होता है ऊपर का, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। Okay, ठीक है। तो ये चीज बेसिक वॉल्यूम पहले हम बनाएंगे, फिर बाकी डिटेल्स को हम देखेंगे। ओके, सो ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो हम जानते हैं जिसमें ग्राइंड करते हैं, जो जग वाला टाइप जो एरिया होता है, तो अगेन इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। सो वन इज द अटैचमेंट, जो एक्चुअली बॉडी पे जाके फिट होता है, जहां पर मोटर लगी होती है। ओके, एंड देन यू हैव द पार्ट ग्लास एरिया। ओके, सो नाउ, तो आप देख रहे हो मैं बहुत लाइटली स्केच कर रहा हूँ, बिकॉज इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड करेक्ट इट। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसका ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़े से करेक्शन किया उसको। यहाँ पर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, मेक श्योर इट्स सिमेट्रिकल। नाउ अब मेरा जो इन्वर्टेड कोन है, क्योंकि ये हॉलो है, सो उसका जो टॉप सरफेस है इट बी लाइक अ एलिप्स। Let's complete this. Okay. And थोड़ा सा जेस्चर दे देते हैं क्योंकि राउंड है यहाँ पर। बहुत हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर कोई मिस्टेक्स होती है आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड करेक्ट इट विद व्हेन आई डू द फाइनल लाइन। राइट। तो जैसे मैंने एलिप्स वाले में बताया था कि एक मेजर माइनर एक्सिस होता है, हम ड्रॉ कर लेते हैं बस फॉर रेफरेंस, एंड दिस सेंटर शुड बी गोइंग लाइक दिस। ओके, सो नाउ वी हैव दिस, अब हमारा जग एरिया बन गया। नाउ वी नीड टू मेक द उसका जो कैप होता है वो हमें ड्रॉ करना है, तो विच इज लाइक एन हेमिस्फीयर। ओके, सो मेक श्योर दैट इज लाइक एन हेमिस्फीयर। लुक्स ऑल राइट। राइट, ठीक है। तो अब मुझे एक बड़ा बेसिक वॉल्यूम मिल गया, एंड डिटेल्स वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो अब इस पे इसका ढक्कन बना देते हैं जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में है। लेट्स मेक अ स्मॉल वन। तो अब एक चीज ध्यान देना, स्पेशली सर्कल को, जो एलिप्स है, जैसे जैसे हम हॉराइजन लाइन की तरफ जा रहे हैं, एज वी मूविंग टुवर्ड्स अप, वो एलिप्स जो है पतला होता जा रहा है। अगर आपको याद होगा जो एलिप्स वाला वीडियो में, द थिंग्स विच आर क्लोजर टू द वैनिशिंग पॉइंट हॉराइजन लाइन दे स्टार्ट अपीयरिंग, दे गेट स्टार्ट गेटिंग फोरशॉर्टेड। तो वो सब सारे प्रिंसिपल्स मैं ध्यान दे रहा हूँ कि आई हैव टू मेक श्योर दैट इट एड, कि वो चीज वहां पर फॉलो हो रही है। ठीक है, एक जेस्चर दिखा देते हैं, स्मॉल डिटेल। ओके, नाउ वी कम टू द हैंडल। सो हैंडल ड्रॉ करते हैं।
तो एक बहुत जेनरिक हैंडल बनाएंगे और वेरी फैंसी समथिंग लाइक दैट। And take this attach to here. So more or less हमारा एक बेसिक पॉलिंग तो बन गया हमारा। नाउ अगर बिफोर आई मेक द फाइनल ड्राइंग, ठीक है, इसमें वो ऐड करना है आपका, बटन ऐड करना है। सो अब एक व्यू पॉइंट में मेरा एक मिक्सर ग्राइंडिंग बहुत अच्छे वॉल्यूम में दिख रहा है, बहुत डिस्टॉर्शन नहीं दिख रहा होगा, बहुत वॉर्प नहीं दिख रहा होगा। एक पूरा मुझे वॉल्यूम, हर वॉल्यूम मुझे समझ में आ रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज, तो ये ड्रॉ करते हुए, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम व्हेन आई एम ड्राइंग, it has to make some sense in terms of visual sense. Okay, so let's finish it quickly, then we'll move on to the other drawing as well. Okay, sure। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ इसका बटन है जो लेट्स से कंट्रोलर। नाउ सपोज ड्रॉ कर लेते हैं। Okay, the perspective। जो कंट्रोलर होता है, again the control also fall in the perspective, so I'm just making a gesture of it, and I can always go back as I said and make some correction। Okay, ठीक है, एक बटन आ गया हमारा। थोड़े से एक और डिटेल्स ऐड कर लेते हैं इसमें, ग्राफिकल एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। Let's say that there is a section here। Okay, so I'm just looking at my drawing and make sure that underneath जो है, ठीक है। अब हम फाइनल करेंगे इसको। So let's add some line weight। So when I'm making the final line weight also, I have to make sure that everything is aligned। Okay, so let's make some adjustment here। और the proportion ये सही नहीं लग रहा था। Okay, so this is here। So let's make the stand। Okay, let's make it quick। बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है, underneath यहाँ दिखेगा। Okay, so now we'll come to the body। यहाँ body है आपका। Okay, so here, so let's say that this is a round shape, तो इसको मैं बहुत थिक लाइन नहीं करूंगा, तो मैं इसको बस शेडिंग कर दूंगा। Okay, just adding some line weight। Okay, so we have this। यहाँ पे लाइन वेट ऐड कर देते हैं, एंड ऐड कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। Okay, so
as I'm adding line weights, your brain is starting to process that, okay, it's a 3D form. Now this is a glass. This material is glass. So पीछे वाला जो है हल्का दिखेगा कॉन्ट्रास्ट में, उसको थिक लाइन नहीं करेंगे, make it like a fading kind of line. Okay, so your material also I'm keeping in mind. Okay, अभी सर्कल है, इसको अभी जग वाले एरिया कर लेते हैं. Okay, here like this, इसको ऐड कर लेते हैं हैंडल को. Okay, और just इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रहा है. Yes. Okay. And so इसको मैं actually I'll use some templates to complete it. Okay, and let's add some thickness to here. Okay. Yes, right. Okay, so this is placed slightly off. No worry. And यहाँ पर हम, let's say there is a gap here. So let's add some shading, cross hatching. Just to show that there is some gap here. Okay, and so here, because the shape is round here, not a thick one, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा. Okay. So it's not a sharp edge here. Okay, so this is underneath, so we'll see this. You'll not see this will be in shadow. This will be also in shadow. Right. Okay. And so here इस पे आ जाते हैं. ठीक है, इसको बटन को लास्ट में करेंगे. Okay, so what I'll do is that, okay, so I'm going to make quite an accurate drawing. So I'm going to use some tools to draw. Okay, so to make it perfect, I can make it freehand, but let's do one thing. Let's try to make it a bit perfect. Okay, so I'm going to use some ellipse template here. And if I find the right size, I don't know, if I doubt this will be the right size. Others will do freehand. Okay, so ellipse template is a bit small. So what you'll do is that we'll leave it. नीचे वाला देख सकते हैं, ये हो सकता है. Okay, so basically this is the ellipse template. Again, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है आपको. Okay, I'm just figuring out. Okay, so which are the ellipse? So here we get spawn one. Let us freehand ही कर लेते हैं. Unfortunately, I don't have the bigger ellipse to make the larger circle. So what I'll do, I'll just make a freehand. So again, because it's a transparent material, so you will not see, पीछे आपको दिखेगा नहीं. So gesture दिखा देते हैं, not details. Okay. Yes. So now this is like a, क्योंकि ये पार्ट का वो होता है आपका स्टील होता है, स्टील होता है. Okay, so what you'll do, इसको मैं स्टील करूंगा और इसको ट्रांसपेरेंट करूंगा. Okay, so
some reflection kind of things. Okay, and we'll also do here. Little bit of shading here. Okay, so button पे आ जाते हैं. इसको मैं last में करूँगा. So here, let's see if I can use some circle template to make this. See, does it look fit? I think so this one fits here, right? Okay, so we have this button. Okay, इसको adjust कर लेते हैं थोड़ा सा. And let's make it. I'll just look at the drawing. So let's make it with thin. So gesture object is on your dialer and just do a little bit cross hatching here. Okay. So this. Okay, so I'll make the steel body part. Steel body part, I'll use marker here. Some rendering here. You need not do this marker rendering. You just want to show something. Okay. Not जरूरी नहीं कि आपको करना है ये. Just to show the gesture. Okay. And do one thing. Handle को भी render कर लेते हैं. The handle I will make it like a dark color. Okay. And let's add some value to the body as well. 3D volume level. Okay, so have some like final touches, and we are done. Okay, so we have the mixer grinder here. Okay, right. So viewpoint drawn a product. Okay, so I hope you like
जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड. सो प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ किया चीज को. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, क्या चीज मैंने किया. जस्ट फॉरगेट अबाउट द रेंडरिंग पार्ट, मार्कअप पार्ट, बट ओवरऑल स्केचिंग पार्ट जो है उस चीज को आपको ध्यान देना है. ओके, एंड so we'll quickly move on to the second drawing, and this is now interior composition. So again, so here I'll not do a lot of shading or something. I'll just make a line drawing. Okay, so again here the approach. So this time I'll do with a blue pencil. तो आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे प्रिपरेशन जो था. Here again you see lot of construction lines, marker and everything. So all lines are jumbled up. But I made a mark, a notation for myself using different colors. So you see all these blue arrows, orange color, these lines and these lines. So these actually are the correct lines. So when I was making this, so I was just thinking, okay, कहाँ पर क्या चीज होगी. Yeah. So this is a view of a bedroom. Now, what I have done is that I took a reference photo, but the perspective मैंने अपना choose किया. The same image, but the perspective is different. It is not that same. Again, applying the principal's perspective, proportions and line quality, वो चीज देखते हुए मैंने पर्सपेक्टिव चूज किया. दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक दिस रफ काइंड ऑफ ड्राइंग. तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप भी ऐसा ही अप्रोच करो. ओके, पहले रफ बनाओ, देखो क्या चीज आपको क्या करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अब ये भी आई लेवल पे है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हॉराइजन लाइन कहाँ पर है. सो हॉराइजन लाइन इज हियर. सो इट इज राइट एट द सेंटर ऑफ द पेज. बिल्कुल सेंटर पे है पेज में. ओके, सो नॉट डाउन और अप, इट इज एट आई लेवल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्केचिंग. ओके, सो फर्स्ट अगेन जैसे मैंने प्रोडक्ट जो किया था, पहले एक पूरे लेआउट बनाएंगे, उसके बाद देन आई विल स्टार्ट स्केचिंग all the details kind of thing. Okay, so I'll just flip the page and see, okay, where do I begin. अब composition sketching में स्पेशली आप टू डी पॉइंट जब सॉरी टू पॉइंट पर्सपेक्टिव आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको मैं एक टिप बता देता हूँ. तो आपको करना क्या है, आपको अपने हॉराइजन लाइन लेना है. You draw the horizon line on the page, and important thing is that where you going to put this vanishing point. Okay, तो इसमें आप रूल जैसे कह सकते हो, जो चीज आप जो ड्रॉ कर रहे हो आपके कॉम्पोजिशन में जो स्केल में साइज में बहुत बड़ा है, इन दिस केस ये बेड सबसे बड़ी चीज है इस पूरे कॉम्पोजिशन में. सो उसके लिए you don't want that this bed to be very close to the vanishing point here. Now in this case the vanishing point, क्योंकि when I was took this vanishing point on the page, this bed was getting too distorted. वो वॉल्यूम मुझे नहीं पता चल रहा था, जैसे मैंने अभी जो प्रोडक्ट ड्राइंग का एग्जांपल लिया. तो व्हाट आई डिड वाज दैट I pushed this vanishing point way beyond this page towards this side. Accordingly, then I adjusted the perspective, walls, windows, or something, door, or something like that, or other जो भी है चीज में. Okay, but other vanishing point I kept it on the page. That is, it is within my frame. Now, so what is this? So how do you decide that where should be my vanishing point? Okay, now what you do is that आप वो vanishing point को पहले आप ड्रॉ करोगे जो आपके फ्रेम में होगा, जो आपके फ्रेम में होगा. ठीक है, तो ये मेरा जो वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो वैनिशिंग पॉइंट 1 बोल लेते हैं, ये मेरा फ्रेम में है. तो यहाँ पर मैं एक्चुअली मैंने एक बाउंड्री बना रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा. तो वो मेरा फ्रेम है, तो विद इन दैट फ्रेम आई टू ड्रॉ, क्योंकि आपको एग्जाम आपको बॉक्स मिलेगा. ओके, अब जो नेक्स्ट वाला जो सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट होगा, सो व्हाट आई विल डू इज दैट इन दैट फ्रेम, ये मेरा जो फ्रेम है, आई विल ट्राई टू फाइंड द मिड पॉइंट राइट द सेंटर ऑफ दैट फ्रेम. तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक रेड डॉट है.
ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है ये बीच में, ये मेरा एग्जैक्टली मेरे इस स्केच को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। नाउ टू फाइंड द सेकंड वैनिशिंग पॉइंट, सो व्हाट यू डू इज दैट, सो यू टेक दिस डिस्टेंस, जो ये वैनिशिंग पॉइंट जो है अक्रॉस दी जो फ्रेम है, you divide it into thirds. So 1, 2, third. So you divide this proportion into thirds. Okay. जहां पर वो थर्ड पोर्शन आएगा वहां पर आपका सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट होगा. सो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ऑन दैट पेज. एंड दिस, जो मैंने ये सेंट्रल जो लाइन ली है, ये आपका वो कॉर्नर होगा, उस रूम का कॉर्नर होगा जो आप टू, जो बिल्कुल सेंटर में होता है, जहां पर सारे ऑल द लाइंस आर मीटिंग टुवर्ड्स इट और पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. अभी जब मैं ड्राइंग करूंगा तो आपको पता चलेगा. So here I'm not going to draw the vanishing, horizon line, because it is under this page. I'm drawing the first corner, the corner of my building, of room, where all the lines are intersecting, where they pass through that. Okay. So this is my the corner. तो जो वैनिशिंग पॉइंट, जो दोनों वैनिशिंग पॉइंट ऑफ लाइंस आ रही है, वो इस कॉर्नर के थ्रू होके जाएगा. Now, so looking at my sketch, so I want to draw some things. Okay. So let's make some lines which is coming from the near vanishing point here. So मैं पहले draw कर लेता हूँ सारे. So this is my floor. This is the base of my bed. Okay. Another line. So bed. Okay. पहले इस लाइन से बनाते हैं. Okay. So बेड का पर्सपेक्टिव, पूरा बेड कंप्लीट कर लेते हैं. Okay. So yes, I'm just looking at my vanishing points and make sure that slightly off. And what are the other walls, other details that need to be drawn? So we have this balcony kind of thing. Okay, so there's some railing. Yeah. Okay, and let's see what other things are coming. Okay, so there is this line being extended. And we have this wall details. तो जब आप इंटीरियर कॉम्पोजिशन कर रहे हो, अगर आप ऐसे ग्रिड सिस्टम बना लोगे तो आपको ड्रॉ करने में बहुत इजी होगा. सो यू विल नॉट यू नॉट गेट मिसप्लेस्ड वे टू ड्रॉ. अब हमने इस वैनिशिंग पॉइंट से बना लिया, अब हम सेकंड वैनिशिंग पॉइंट से बनाएंगे. सो आई एम अगेन लुकिंग एट माय अंडरनीथ स्केच. सो आई वांट टू सी द व्हिच आर द. Okay, so what I'll do is that let me choose another pencil so you can see okay, which are the different lines. Flip the page and see that, make sure that everything is aligned. Okay. Make sure that look at the page. Make sure this and what other lines are going towards that second vanishing point. Okay, so we are here like this. This. Okay, and we have top row. Okay. So basically हमारे जो दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स है उसके मैंने कंस्ट्रक्शन बना लिया है.
So I know, okay, where the things are there. और details add कर लेते हैं. Details here. Okay. Now, so then from vertical lines as well. So if you remember, in 2-point perspective, all these vertical lines remain 90 degree towards the vanishing point here. So make sure that, so I'm highlighting this vertical line with a different color, so आपको पता चले. Okay. So we have vertical lines here. Okay. So more or less, we have a basic construction. We just need to add the details. Okay. So let's start sketching. And I'm just looking at my rough sketch. Have I missed something or not? Okay. So more or less, we have everything. Okay. So let's start adding details. अब इसको हम complete करते हैं इसको. Okay. So I'll start with the bed here. Then starting with the basic volume. There's a table here. Details. Okay. And okay. So there's a balcony outside. Open view है. And the floor. तो यहाँ से एक wall आ रहा है. Okay. So there's a second wall coming from here. It's immediately. Okay. Side wall here. And so there are some like columns kind of here. Yeah, columns हैं. Here in this. Some pillow. बस एक gesture देना है. Okay. So let's say there's a bed sheet over there. एक bed sheet है यहाँ पर.
sections in the area like this. Okay. Now, okay. Now, so let's add some details. So maybe let's say there is a table here, a round table kind of thing. So maybe there's another furniture here. Maybe some cushion sofa kind of thing. There's some table. Yeah. And let's say this is made of glass. So it's आप क्रॉस हैचिंग ऐसे करके आप रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो. Yes. Yeah. So let's say certain trees. Yes, so again, this is a transparent material. Okay. So let's say there's a curtain here. Very simple kind of. Okay. So now you got a very basic drawing of like a room kind of thing. Okay, so someone says that it looks like a hospital room kind of. Okay, if you want to consider it as a hospital room, okay, that is fine. Okay, so like a lot of things you can add. Okay, so let's add just like one more thing here. थोड़ा सा वो लगेगा. Okay, so let's do one thing. Let's say maybe there's a plant over there. So, we do that. We'll just add more line weight so we can see that. Making some focal point. Okay. Add some line weight here.
Okay, so there's final touch. Let me make the floor. Okay, and let's okay. So do you have something that is like a drawing that's finished? Okay, right. I hope you understood, right? तो प्रोसेस आपको समझ में आया कैसे क्या ड्रॉ करना है क्या चीज़ है? I hope. Okay. I see there are not a lot of questions. Okay. So अगर किसी को question है, you can just ask me. Okay. And okay. So I hope you understood today. Viewpoint, draw करना. So a product का viewpoint. Okay. And a composition, interior composition. So this is basically, that is what you need to practice. Okay. Like for example, I think I started at around this sketch started at around 7:50 and I finished about a minute ago. So approximately it took me 10 to 11 minutes to draw. So the reason being that because I did not spend too much time on worrying about making a construction. आप पहले कंस्ट्रक्शन ऐसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद फिर आपको इजी हो जाएगा कि आपको जस्ट फॉलो करना है उसको, बस ड्रॉ करते वक्त फॉलो करना है उसको और कुछ नहीं करना. Everything looks in perspective, proportions, everything is fine. Okay. Right. Okay. So in exam, markers are not allowed. Okay. So markers are not allowed in exam. You only have to draw drawing pencils. Okay. And most probably more than 90% of the time it is black and white. So black and white drawing करना है आपको. Okay. Colors, maybe they ask me most probably maybe for poster design. Yes, poster design questions are asked sometimes in exam. Yes, it is asked. Okay. Okay, so I hope you learned a lot of things here today in this session. And इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसे आज हमने आई लेवल पे मैंने बात किया कि आई लेवल पे ड्राइंग है, तो नेक्स्ट टाइम विल डू हैंड साइड व्यू. ओके, या लिजर्ड साइड व्यू करेंगे. ओके, so I hope you learned a lot of things today, and hope to see you in next session. And so I'll be doing more of this kind of demos in coming up sessions. एंड इसमें थोड़ा सा एक चीज जो मैंने ड्रॉ करके नहीं दिखाया वो आपका एक ह्यूमन फिगर्स है जिसमें, तो ह्यूमन फिगर्स इज एक्चुअली नॉट माय एक्सपर्टीज. सो आई एम बिकॉज माय बैकग्राउंड इज इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, बट डोंट वरी. So we'll have another mentor to cover up that aspect. So where you have to draw, where the human figure is involved in a composition. Okay, आप चिंता मत करो, उसके भी सेशंस होंगे. तो यहाँ पे बेसिकली एक मैं पर्सपेक्टिव में कैसे क्या ड्रॉ करते हैं प्रोडक्ट ड्राइंग और कॉम्पोजिशन कैसे क्या ड्रॉ करते हैं, वो चीज मैंने आपको दिखाया. सो आई होप यू लाइक दिस टुडेज सेशन एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट सेशन. ओके, एंड बाय, टेक केयर. थैंक यू दिलीप. I don't know if I'm the best or not. I don't consider to do my best,
बस आई ट्राई टू टीच व्हाट आई नो, सो यू कैन लर्न, यू कैन प्रैक्टिस। एंड आप जो चीज़ मैंने जो इन सेशंस में बताता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करो, आप अपनी भी क्रिएटिविटी इनोवेशन उसमें डाल सकते हो। ठीक है।